हेलो फ्रेंड, मैं अनुज सर। आज बेसिकली आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर स्टार्टिंग विद अकाउंट्स। तो करने क्या वाले हम लोग, सो वी वुड बी टेकिंग अकाउंट्स टुडे एंड अंडर अकाउंट वी वुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड गोइंग विद द फाइनल अकाउंट। नाउ बिफोर आई प्रोसीड with the final account, friends, just wanted to tell you, see, we had started a lecture where I explained you initial 3 to 4 chapters of account. So I just tried to give you the basic of it. And now if you see the things where the account journey ends, it's after the finalization of final account. So today I'm starting a chapter called final account. Okay? Now a simple question comes, friend. What is final accounts? So when the word final account says, the word itself means कि ये last stage है accounts का. See, जो आपकी business आपने चालू किया, वो पूरा बिजनेस साल भर तुमने एक्टिविटीज की, उसको बुक्स में रिकॉर्ड किया, अकाउंटिंग के पूरे प्रोसेस को फॉलो किया, एंड देन एट द एंड व्हाट यू डिड इज यू प्रिपेयर्ड अ फाइनल अकाउंट. नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू हैव अ फाइनल अकाउंट? बेसिकली सर, फाइनल अकाउंट है तो क्या है? तो फाइनल अकाउंट इज नथिंग बट योर इनकम स्टेटमेंट एंड योर पोजीशन स्टेटमेंट. साहब एक बात समझो, जो भी बिजनेसमैन है, whether he is in India, whether he is in any part of the world, whether he is a sole trader or a partnership or a family, मतलब जितने भी प्रकार के बिजनेसमैन और जहाँ भी हों, सबको अल्टीमेट अपने बिजनेस से मतलब क्या है? Every businessman has two objectives. The objective number 1 is finding their profit and loss, and the objective number 2 is finding their position, that is called balance sheet. मतलब फाइनल अकाउंट जो फाइनल है उसमें से निकलने क्या वाला, तो उसमें से हमको हमारा इनकम स्टेटमेंट मिलने वाला, और दूसरा जो मिलने वाला वो है बच्चों पोजीशन स्टेटमेंट. दैट इज व्हेन आई से दिस, इट मींस योर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, एंड इट आल्सो मींस अ पोजीशन स्टेटमेंट मींस बैलेंस शीट. अब बच्चों आगे चलते हैं. सो लेट मी जस्ट रीकैप ऑफ थिंग्स दैट आई हैव ऑलरेडी टॉट, और व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. So the first step in the process of accounting is there is the transactions. The second step is the transaction has to be recorded in the books of account on the basis of double entry bookkeeping system. तो मैंने आपको पहले बताया कि the first step is transaction. The second step is on the basis of double entry, that is debit and credit rules, you record the transaction in books of account. What are those books? One is the journal and the second is the subsidy books. Journal is a book which consists a recording of the transaction on the basis of debit and credit. And subsidy books are what? They are basically a special book, specialized books devoted to record specific transaction. but जो देखा, अगर जर्नल में हम क्या करते, सब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लेते, जितने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस है हम दो जस्ट रिकॉर्डिंग करते रहो. वेरेज जो सब्सिडी बुक्स होते हैं, सब्सिडरी बुक्स आर द स्पेशलाइज्ड बुक्स, मतलब वो एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. जैसे कि परचेज बुक ओनली क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करेगा, सेल्स बुक ओनली क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करेगा, परचेज रिटर्न जो परचेज किया था अब रिटर्न कर दे रहा हूँ, इसलिए परचेज रिटर्न बुक इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड. सेल्स रिटर्न जो मैंने सेल किया था लोगों ने रिटर्न कर दिया, दैट्स कॉल्ड सेल रिटर्न बुक. एंड देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज कैश बुक्स, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल एंड पेटी कैश बुक. सो दीज आर ऑल स्पेशलाइज्ड बुक. तो जर्नल, सब्सिडी बुक्स, इन दोनों से अल्टीमेट क्या बनने वाला बच्चों? लेजर. व्हाट इज लेजर? लेजर इज अ बुक व्हिच कंसिस्ट अकाउंट्स. अब भाई कितने अकाउंट है? ऑब्वियसली 3 ही अकाउंट्स होने वाले, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. अच्छा, उसको बना के क्या करेंगे? वी विल फाइंड आउट द एंटायर रिपोर्ट्स ऑफ दैट अकाउंट. जैसे यार एक कैश अकाउंट बना दिए लेजर में, तो क्या मिलेगा? कैश का पूरा एंटायर ट्रैक रिकॉर्ड मिलेगा. सो वी वुड बी स्टडीइंग ऑल दिस हियर. And from the ledger you take the closing balances, and from the closing balances all the ledger account you prepare a trial balance. But your trial balance here, it is nothing but a statement which consists your debit and credit balances. And then at the end, on the basis of debit and credit balances, you prepare your final account. And when I see the final account, so we would be discussing about all these in detail. A step ahead, understand, explain your there's a business transactions. Transactions are what? कि यार कोई भी बिजनेस करो, whether you are running a hospitals, whether you are running a school, whether you are running a college, or maybe you are running a shop, कोई भी दुकान चलाओ तो होगा क्या? Either you sell goods
or you sell a service, and those goods and service has to be recorded. Where do you record this? In the journal. So transaction is nothing but buying and selling goods and services. Next, अब बच्चों जब जर्नल एंट्री पास करते हो तो आई वोंट बी रिपीटिंग दिस ऑल, यू हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड इट कि भाई जर्नल एंट्री था क्या, कुछ नहीं. देयर इज अ फॉर्मेट, डेट, देयर इज अ पर्टिकुलर, देयर इज लेजर फोलियो एलएफ कॉलम, देयर इज अ डेबिट अमाउंट एंड देयर इज अ क्रेडिट अमाउंट. अब उसमें आपको क्या करना था, यू हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑन व्हाट बेसिस, डेबिट एंड क्रेडिट बेसिस. सो सी फॉर एग्जांपल देयर इज अ आई हैव ऑलरेडी टेकन हियर अ जर्नल एंट्री when a person purchase, let's say I purchase goods from Rakesh, the entry is purchase account debit to Rakesh account. Or let's say I sold goods to Amar, so what's the entry? Amar account debit to sales. Now see, I won't be teaching you journal entry, reason I've already taught you. For journal entry, please visit my previous videos. Next, then I also explain you ledger. But your ledger होता क्या? Ledger is nothing which will tell you detailed information about that account. अब जर्नल में क्या होता था, लाइन से जितने भी ट्रांजैक्शंस होते थे सब रिकॉर्ड कर देते थे आप. परचेज का, सेल्स का, सैलरी का, रेंट का, सब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिए. अब उसमें अगर मैं पूछता हूँ कि कैश टोटल कितना आया, कैश टोटल कितना गया, कैश टोटल कितना बचा, इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें जर्नल में नहीं मिलता है. तो कहाँ मिलता है? तो ऑब्वियसली वो लेजर अकाउंट में मिलता है. इन लेजर अकाउंट व्हाट यू डू इज यू प्रिपेयर एन अकाउंट वेयर the debit side is there is a credit side. Debit side you record all the cash inflows, जैसे कैश अकाउंट है तो जो कैश आएगा वो सब कुछ रिकॉर्ड किया जाएगा. क्रेडिट साइड जो कैश जाएगा वो रिकॉर्ड किया जाएगा. और उससे हम लोग क्या ढूंढेंगे बच्चों, बेसिकली क्लोजिंग बैलेंस की कैश बचा कितना है. सो लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग ऑफ द लेजर, आई टोल्ड यू हाउ टू बैलेंस द लेजर. एक नाम बनाते कैश अकाउंट. Cash can, as for example, let's say here there is a cash account. Capital you had 1 lakh rupees, 50,000 का आपने सेल्स किया और किरण से आपको 65,000 रुपीज आया. तो ये डेबिट है. कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू सेल्स टू किरण, ये पैसे आपके आ गए. अब जो पेमेंट किया कैश जहां गया तो किसके लिए गया, परचेज के लिए गया, ड्राइंग के लिए गया, तो ये सब माइनस कर दो. नेट बचता क्या है, दैट इज योर क्लोजिंग बैलेंस. हाउ मच इज द क्लोजिंग बैलेंस, 1,40,000. So debit का total 2,15,000. Credit का total you write the same. Or from total of the credit should be minus, and then the closing balance that you have is 1,40,000. Now when you say a closing balance, बच्चों closing balance होता क्या? Closing balance मतलब साल के एंड में कितना कैश बचा है. तेरा डेबिट में जो पैसा आया वो लिख दिया, उसका टोटल लिया, उसको दूसरे साइड में लिखा, उसमें से जो गया वो सब माइनस किया, जो बच्चा उसको हम लोग ने बोला क्लोजिंग बैलेंस. सो दैट इज बाय बैलेंस कैरिड आउट. सो आई हैव एक्सप्लेन यू लेजर आल्सो फ्रेंड, अ स्टेप अहेड. नाउ कम्स you prepared there was a transaction, there was a journal, and then there was a ledger. From both the ledger you had a closing balances. Those closing balances are put down into statement format called as trial balance. What is the trial? Trial balance means the balances of all the accounts. How many accounts? There are 3 accounts: personal, real, nominal. Personal account can have what balance? Debit or credit. Real account will have which balance? Obviously those are your assets, they will always have your debit balances. Then comes nominal, it can either have debit or credit. So here we have a trial balance where I am showing you the debit balances like wages, purchase, carriage, sales, these all are debit balance. And there is a credit balance for purchase, return, sales. And if you take the total of it, you get 1,91,020 and 1,91,000. मतलब trial balance is what? But your trial balance is nothing, a closing balance of all the accounts put into statement format. भाई जो कुछ भी तुमने लेजर बनाया उस लेजर में जो बैलेंसेस आए, जितने भी क्लोजिंग बैलेंसेस आए, उसको हम लोग ने ट्रायल बैलेंस में लिख दिया. अच्छा, व्हाई डू आई प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस? 1 to check arithmetical accuracy कि भाई तुमने जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए बराबर है या नहीं, to find out your errors, and plus one more thing, your final account is prepared on the basis of the trial balance. But if there is no trial balance, you cannot prepare a final account. A step ahead, a question comes, what do you have in final account? तो बच्चों बेसिकली फाइनल अकाउंट में हमारे पास इनकम स्टेटमेंट होने वाला है और पोजीशन स्टेटमेंट होने वाला है. इनकम स्टेटमेंट मतलब वो जिससे मुझे इनकम पता चलेगा. कोई भी बिजनेसमैन ले लो, अल्टीमेट हर एक बिजनेस में साल भर बिजनेस करके क्या मतलब रहता है?
सर अकाउंटिंग से उनको ज़्यादा मतलब नहीं रहता, उनको सबसे ज़्यादा मतलब रहता है कि उनने क्या प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया. Yes, कोविड का ईयर था 2020, might be people have suffered lot of losses. Yes, so your profit, your loss, these both data you get from which account? Your trading and P&L account. And then your position, obviously यार आपकी बैलेंस शीट कि आपने क्या क्या assets बनाया और आपकी क्या liabilities है. So this is prepared by everybody. A question comes, why do people prepare final account? तो बच्चों अगर common sense देखा जाए तो सबसे पहले देखो, when you do a business and when you do a large scale business, तो ऑब्वियसली जीएसटी फाइलिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है, अकाउंटिंग करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑडिट रिपोर्ट भी समझना पड़ता है या बनाना पड़ता है. सो फॉर लीगल कंप्लायंस लाइक नो, इफ यू आर अ कंपनी एक्ट का कंप्लायंस रखता है, इफ यू आर अ पार्टनरशिप एक्ट का कंप्लायंस रखता है, और मे बी इफ यू आर अ सोल ट्रेडर तो इनकम टैक्स रिटर्न का कंप्लायंस रहता है. सो इन ऑर्डर टू कंप्लायंस विद द लॉ यू रिक्वायर्ड टू फाइल अप और प्रिपेयर अ फाइनल अकाउंट. प्लस लॉट ऑफ टाइम you need a loan from the bank, so they ask you for your income statement and position statement, and then they ask your balance sheet, so for those purpose. And plus it's also important to understand your performance of the business or position of the business. So this is the reason why you require a final account. Now question comes, what do you have? I said it's income, trading account, P&L account and balance sheet friend. Now see, final account में trading account क्या होगा? So friends, trading account is account जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि तुमने जो ट्रेड किया है, जो मटेरियल लाया, जो परचेज किया, जो प्रोडक्शन कॉस्ट इनकर किया, उसको रिकॉर्ड करो, और उसके बाद जो सेल किया, जो इनकम कमाया, उसको रिकॉर्ड करो. मतलब एक्सपेंसेस एंड इनकम विच आर डायरेक्टली लिंक टू योर प्रोडक्शन एक्टिविटी और टू योर बिजनेस एक्टिविटी. डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, जो कुछ भी होगा उसको आपको ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करना है. अब क्वेश्चन है, why do we prepare trading account? It's simple, in order to find out gross profit and gross loss. देखो logically मतलब क्या रहता है यार, we want profit. Now what is this gross, what is this net? So basically they are, as for sole proprietor and for partnership, as such they have said it, you need to prepare both the account, a trading and P&L. The objective of preparing trading account is to find out your gross profit or your gross loss. How do I get the gross profit? Very simple. You write down all your debit trading expenses, you write all credit incomes, and you take the total. See which side is bigger. If trading credit side is bigger than trading debit side, I would call it what? I will call it a profit. मतलब यार trading account is which account? It's a nominal account. उसके income side है credit side, उसके expense side है debit side है, और क्या भाई, बड़ा simple है. इनकम अगर ज्यादा रहेगा तो तुमको भी पता है इनकम माइनस एक्सपेंसेस आर प्रॉफिट. बट व्हाट प्रॉफिट? इट्स अ ग्रॉस प्रॉफिट. सो हियर आई हैव अ स्पेसिमेन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट वेयर द आइटम्स आर एज स्पेसिफाइड. फर्स्ट आइटम ऑन द डेबिट साइड यू हैव ओपनिंग स्टॉक. A question comes, what is opening stock, friends? So it's nothing, unsold goods at the end of the year are called as closing stock, and which is subsequently bought to the beginning of the year is called as opening stock. Plus we have a purchase. From the purchase might be you return back certain goods. तो यार आपने धंधा चालू किया, कुछ माल स्टार्ट साल के एंड का था वो आपने लाया, कुछ माल आपने खरीदा, उसमें से कुछ पसंद नहीं आया, रिटर्न बैक कर दिया, सो नेट परचेसेस दिखाया. एंड देन फिर उस बिजनेस की एक्टिविटीज में जो एक्सपेंस बुक, डायरेक्ट एक्सपेंस, वो ट्रेडिंग के डेबिट साइड. A step at trading के credit side you have something called as sales return. You have goods distributed as a free sample, good loss by fire. So my friends, see, today I won't be explaining all those things in detail. We will be covering up in the subsequent lecture. Here I just wanted to introduce you what's the accounting process is and what's the final stage of account is, and under the final step what do you have. So when you have a trading account, a question, why do we prepare trading account? Simple, the answer is to find out gross profit or gross loss. Next we have even a P&L account or called as profit and loss account. Now P&L account is where your indirect expenses, indirect incomes are recorded. Now it's important to understand why do we have direct and indirect and what is direct and indirect. So direct expenses, direct incomes are those which are directly linked with the production or which is directly linked with the production cost of the goods or which are directly linked with the sales. Indirect expenses are indirectly linked to your business activities. Maybe, let's say if you are
made a goods, you want to sell it, you want to market it, so selling cost, distribution cost, or maybe there are other income from your business apart from your operating activities. So those are indirect income. So you record your indirect income, you record your indirect expenses, and then from the P&L you get your net profit and net loss. A last stage question is, what is a balance sheet? So balance sheet is a point statement. It is prepared on a particular date, and what's the objective? Very simple, to find out your liabilities and to assets. A simple, if you see, there is a capital, and then the creditor, bill payable, the loans that you have taken, or liability is what the amount you have to pay to somebody, and asset is what you own, the property belonging to your business. Done with this, friend. Apart from this, we would be covering the other things in the subsequent lecture, where I will be explaining you what is adjustment is, and then I will be solving even the sums related to final account. So in short, I just wanted to revise things what I've taught you. What is accounting process, what are the accounting entries, and how do we prepare final account, and what things are included into final account. Now before I end with the lecture, my request to all my friends, please don't skip this chapter, because this chapter is the base of your entire accounts. If you don't understand the accounting final account, then there's no point studying accounts. Okay, so do focus more into it. Along with this, please kindly share and subscribe the channel, and do write a comment and positive feedback. Thank you for attending lecture.